Hello. Hello everyone. So अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं. I'm not able to see any comment. Okay. और अगर कोई जुड़ना चाहता है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं. हेलो एवरीवन. अभी
Hey Nishant, you can join through the link also if you want. Uh, like, and then maybe we can have uh, you added in the uh, stream itself live. So if you want, okay. So where do I see value in the current market? It's like um, banks, few of the banks, just because the microfinance issue is there. So all of the banks have corrected. But if you ask me, some of them which don't have like their exposure towards microfinance, and that some of the top banks which didn't get much corrected, like ICICI बैंक, आप अगर देखेंगे अभी तो जो प्राइस टू बुक है आईसीआईसीआई का, इट्स लाइक 3 to 3.5 पर है. एंड हिस्टोरिकली अवर बैंक्स लाइक, आप देखो अगर कोविड के पहले भी जो कोटेक बैंक्स एंड एचडीएफसी बैंक्स, लाइक कोटेक तो 5.5 पर ट्रेड कर रही थी, right? So they used to trade at quite a high valuations. Now it's like they all have come three. The maximum मेरे को लगता है जो अभी ट्रेड कर रही होगी आईसीआईसीआई 3.5 times बुक पर ट्रेड कर रही है. So there is a scope for re-rating to them, but not all will get re-rated. That should be there. Smaller banks, अगर आप mid cap banks में देखेंगे तो IDFC, like they had exposure towards microfinance. कितने quarter तक चलेगा? RBL bank, then Bandhan bank, those kind of banks, उनका एक्सपोजर जो है वो माइक्रो फाइनेंस की तरफ ज्यादा है. आप ऐसे देख सकते हैं जिनका मे बी विच आर, हे हाय निशांत, जस्ट गिव मी 1 second. हे हाय निशांत, हेलो, कैन यू हियर मी? निशांत, you can speak. Hello. Hello. Yeah, hi. Hey, hi Nishant. So you are discussing about the banks, right? So that's what my assessment is like, where the value is. Maybe it is somewhere in the banks right now, or the NBFCs where there is maybe जहाँ पे like आपके NBFC जो home finance की तरफ है, there are NBFCs which more of having a secured portfolio rather than unsecured, avoiding those finance का portfolio है. So NBFCs में देख सकते हैं banks like CSB Bank, which is mostly dealing with the gold, then ICICI Bank, as I already told you. HDFC Bank, it has not done any, like last 2-3 साल में HDFC ने perform नहीं किया है. So I'm not sure, like maybe it can do from here. So that's how I think. So maybe any further question that you can put. Hello. Yeah, hello. Yeah, yeah, I can hear you. Yeah. So in microfinance, I think there is some more pain left for maybe 2-3 quarters more. Yeah, that looks there, because अगर आप देखोगे जो recent quarter है, so the pain has started. अभी आप जो recent interviews इस quarter के बाद के आए हैं, जितने भी management ने बोला है, so December 2023 में the pain started, like the cycle started for a downfall when RBI came and said कि आप unsecured lending में they started tightening the things. And then what has happened after that, जितने भी आपके, अगर आप लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर के बाद के इंटरव्यू देखोगे जिस भी मैनेजमेंट के बैंक के, एवरीवन सेड दिस इज नॉट माय बुक, एवरीवन सेड दिस इज नॉट माय बुक, दिस इज समवन एल्स बुक. एंड 2 क्वार्टर के बाद हर एक कोई वही लोग आ रहे हैं जो कहते थे कि हमारी बुक नहीं है, एंड उन्हीं के बुक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम निकली. आप देखोगे जाके, आप आईडीएफसी का देख लो. आईडीएफसी मिस्टर वैद्यनाथन वाज लाइक, उनकी तो कहानियां इतनी ज्यादा कही गई हैं, लाइक कि उनसे ज्यादा कोई सच्चा नहीं हो सकता. बट इट्स मोर ऑफ लाइक देन ही वाज हिमसेल्फ सेइंग कि नहीं, हमारी बुक तो बहुत ही प्रिस्टीन एंड ऑल दोस थिंग्स. And then after 2 quarters it was like, oh, हमारे issue है, and then we have 12,000 crores of microfinance book,
उस 12,000 करोड़ में से 10% का एनपीए हो गया। और वो जो अभी उन्होंने प्रोविजन लिया है, एनपीए तो हुए भी नहीं है, प्रोविजन उन्होंने लिया है, वो प्रोविजन नाउ नेक्स्ट क्वार्टर में दे कैन स्लिप इनटू द एनपीए, राइट? सो अगर आप देखोगे ओवरऑल लेवल पे आपको एनपीए बढ़े हुए नहीं दिखेंगे, बट दिस विल बी लाइक उनके प्रोविजन में आया है, तो मे बी कमिंग 1 or 2 quarter इट विल कम टू एनपीए, एंड देन आफ्टर दैट टेक्निकल राइट ऑफ होगा वहां से। सो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट देयर होल बुक, राइट? अल्टीमेटली इक्विटी से वो पार्ट गायब हो जाएगा, सो देन बुक तो इम्पैक्ट करेगी उनकी वहां से। सो आई डोंट थिंक लाइक 2-3 quarters विल बी देयर, बट मार्केट विल स्टार्ट डिस्काउंटिंग इट प्रायर, लाइक मे बी 1-2 quarter, 1 quarter पहले ही कर देगा, उनका प्राइस पहले ही डाउन कर देगा। मोस्टली हो भी क्या होगा, 1 आध क्वार्टर और इनको पीटेगा, एंड इसके बाद बॉटम बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है बॉटम बन जाएगा, और वहां से फिर अगर गवर्नमेंट ठीक स्टेप्स लेती है, एवरीथिंग विल हैपन लाइक दैट। If government takes the right steps, then the cycle can turn. Otherwise, so we'll be left with that. That's all The I main would thing is that some of these companies, good companies like Arman and Credit Access, are trading even below their COVID lows, like on the basis of price to book. नहीं यार, जो जो ये आप बोल रहे हो ना, अरमान और क्रेडिट एक्सेस वाला जो है, सो वो जो क्रेडिट एक्सेस, आप उसका पोर्टफोलियो देखो, इतना माइक्रो फाइनेंस है, लाइक आपको ये नहीं पता उसमें से, लाइक आई वाज लिसनिंग टू वन इंटरव्यू वेयर द पर्सन गेस्ट सेड कि एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज कि तो जो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने लोन लिया, लोन बुक तो बढ़ रही थी कंपनीज की, बट जो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने लोन लिया वो नहीं बढ़ रहे थे आगे से, राइट? सो इट वाज द सेम Actually, पीपल। the thing was that the same person was taking loan from या 2, 3 companies. multiple entities, yeah, the same Yeah. person was given loan by the multiple entities, so it was more of an evergreening of the loans, right? So this It is, was. I was just asking my house maid, and she is Mhm. also doing the same thing. Like she has taken loan from some microfinance, and then she is paying the first one and taking the loan from another one. So And you are from like practically which, also we are seeing this thing happening. and you live in like which place you're from? I am from Jharkhand. Oh, okay, Uh, okay. yeah. And where are you from? Actually, I am from UP, but I live in Bangalore. Like I work here and I live here. So, Okay. yeah, so that's how it is. Apart from that, वैल्यू यार कुछ कंपनीज मेरे को ऐसा दिखते हैं कंज्यूमर में हैं जो लाइक काफी डिसेंटली प्राइस्ड हैं, डिसेंटली प्राइस इन द सेंस कि उनके पिछले 2-3 साल में नहीं चले हैं, आईपीओ आया एंड देन दे फेल फ्रॉम देयर लाइक 50%, 60%, 70%। और अगर यहाँ से, क्योंकि कंज्यूमर में सब कुछ स्लो डाउन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप देखोगे तो मार्केट ने अच्छे से पीटा है सबको, एंड द मार्केट इज अज्यूमिंग की सेल्स शायद यहाँ से इंप्रूव नहीं होगी, ऑल दोस थिंग्स। बट लास्ट ईयर का जो बेस है, एक्चुअली लास्ट ईयर में उनका ऑलरेडी प्रॉफिट्स वगैरह काफी डाउन हो चुके हैं, सो मेरे को लगता है बेस जो है वो बहुत लो सेटअप हो चुका है, दैट्स व्हाट माय अजम्पशन इज। सो अगर वो लो बेस पर थोड़ा भी इन्वायरमेंट चेंज होता है हमारा, सो देयर विल बी लाइक 30-40% उनके जो बॉटम लाइन ग्रोथ आ सकती है वहां से। सो दैट इज हाउ आई फील। अपार्ट फ्रॉम दैट तो मेरे को लगता है पीएसयू वगैरह तो, इफ यू आस्क मी, लाइक आई फील कि दे हैव लाइक run too much there, in the sense like everyone So could how have much bought. are you in cash or you are fully invested? Uh, no, like almost fully, like maybe 5-10% hoga, 10% around, and then fully invested. That's all. So you are a full-time investor or No, like I work with a US based bank here as a credit rating analyst, and okay. yeah, this is like after my work hours, this is my full time work. That's how it can be done. So actually recently only I came through your YouTube channel maybe 10, Oh, 15 days back, and, and I was just searching YouTube right now and you were live, so I just joined. It was oh, nothing. So are yeah. we the only two people here right now? Some more people have, I'm not sure, someone micro cap stocks. Micro cap stocks, if you want to join the stream, you can join from the link that I have posted in the chat.
So maybe it will be conversation between three people rather than we two are having it. So that's all. Actually, some of this, alcohol companies were quite good to invest in like 6 months back, like Tilak Nagar and all. But I have missed the bus in those companies. I don't Actually, know if they, I covered Tilak Nagar yeah, yeah, somewhere October I covered, and from there also like it has gone up like 30-40%. It is up from there. uh, So so you have been investing since like last like 10 years or what? somewhere around 7-8 years. Up before that, like I purchased my first stock in 2011 or 12. But Hmm. that time I was not much aware and all those things. But from 16-17 onwards, I started reading books and all. Start Okay. traded a lot, and then finally thought of like quitting the trading and going towards the fundamental investing. So luckily, I was some of those people who made money through trading also. Maybe I was lucky. That what I would say. So that's how it is. Yeah, sometimes luck favors, but ट्रेडिंग में पैसा बनाना टफ है काफी. हाँ टफ तो है in a sense is like कि अगर आप yeah, if you ask me, a good trader will be the one who doesn't trade on daily basis. A good trader will be the one who trades maybe uh, once or twice, or like rarely, like 2-3 times in a year, or maybe not every day. Every day तो हो ही नहीं सकता a good trader. Because a trader is the one who has a lot of patience and then courage to all needed for investing also. But patience, I believe, for trading, it more patience needed because a good trader will be the one who will be waiting for the opportunity, like when the opportunity will come and all those things. So that's how. Actually, there are many good traders and there are many good investors, but there are There are hardly people who are both good investor and good traders. Both. या अगर आप मेरे को पूछेंगे सो इट इज अ माइंडसेट जो माइंडसेट है ना आदमी का वैसा Yeah, बन yeah. जाता है इट्स Hmm. मोर ऑफ लाइक अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड देन ट्रेड कर रहा हूँ तो एक माइंडसेट मेरे ख्याल में तो एक माइंडसेट का होता है बट स्टिल आई फील लाइक I used to trade in currencies like and unfortunately RBI banned retail in traders or retail individuals from trading currencies. Yeah, like you cannot take naked positions in USD or any currency. You cannot take naked positions if you don't have like hedging के लिए ले सकते हैं but naked position नहीं ले सकते from April 24 onwards. So that's how it was. But I feel like there was a good opportunity. I wrote an article also a month back what I feel about the USD and rupee. Maybe I'm not sure if you would have seen that. I wrote an article month back, like rupee used to be or USD like 84.2 something like that, and when it was like 84.7, I still 84.07, 84 rupees 7 paisa USD was trading like USD to INR. So my sense was like that everywhere. Like if I was selling like anything and RBI, but rupee was not depreciating, so my sense was that like it cannot happen like that. Someone is doing it artificially. It is more of like that, like the market fell 10-12% in a month and the stocks were down like anything. It was like approximately 10-20 billion dollars of selling happened, but the rupee didn't depreciate. So I was like someone is doing it artificially, and then it was like it has to fall from there. And it started, I wrote an article at the time, and then your forex reserves, the data comes, I believe weekly or bi-weekly the data comes. So your forex reserves start declining, and the call rates in the market that going up started going up. So these all are signs that I saw. I said these all were the sign in September 2022 also. These all are the signs in October, November month, October month also. And if you go to September 2022, uh, within a month, stock fell. Oh, sorry, within a month, rupee depreciated 3 to 4% after that. When your
forex reserves started falling, and like 50-60 billion they fall within a month or two, and your call money rate started going up. The same signs were there in November month. I was like, I feel like rupee will depreciate from here 3 to 4%, maybe more. And nowadays, like Friday, we touched 85.8 or 85.7, like 50-60 paisa down, almost rupee depreciated. I still feel within a month from here, maybe uh, we may be like another 2-3% rupee will depreciate. Okay. So Nishant has left the stream. Sandeep sir is asking for a fresher, which companies are good for investment for early profit. अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो मेरे ख्याल में आप म्यूचुअल फंड में जाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। द रीजन बीइंग इज कि जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर आपका इट विल बी मोर ऑफ सम प्रोफेशनल इज मैनेजिंग फॉर यू। आप खुद से इन्वेस्ट करेंगे, मे बी अगर आपका नेटवर्थ, आई एम नॉट श्योर कितना आपका नेटवर्थ है, बट अगर आपका नेटवर्थ 1 करोड़ का है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आपका नेटवर्थ 1 करोड़ का है, आप इंडिविजुअली आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप एक ठीक साइजेबल पोजीशन लें। व्हाट आई मीन इज साइजेबल, बाय साइजेबल पोजीशन इज कि अगर आप 10 लाख का पोजीशन लेंगे, सो या आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करें, ऐसा आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। यू विल बी इन्वेस्टिंग मे बी 10,000 5,000 इन पर्टिकुलर स्टॉक, एंड वो 5,000 से कभी किसी का लाइफ चेंज नहीं होगा। एनीवन, व्हिच आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, किसी के पास 1 करोड़ की जगह कम भी हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली ही और शी कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लाइक अपना एक, आपको भरोसा है कि एटलीस्ट मैं किसी प्रोफेशनल को दे रहा हूँ। इट वाज मोर ऑफ कि अगर आप खुद से कार चला रहे हैं, तो आप कार लेके मेन रोड और हाईवे पे जाने में डरेंगे। अगर आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, till the time you have practiced enough and you have gained that confidence, you will not take it on the highway. So but someone who's driving it professionally, आपका एक उबर या ओला का जो भी आपका अगर ड्राइवर है, अगर आपने उसको पैसा दिया है and he is a professional, he or she is a professional, so they, you will be like sitting confidently in the car and you will be like कि okay ठीक है, इस बंदे को चलानी आती है, so the person can drive. So the नए बंदे के लिए तो I would suggest कि the person should choose mutual fund route, अगर डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा है, कितना वो लगाना चाहता है, बिकॉज आप जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से आपको मिलेंगे, दोज दैट विल बी लाइक 10%, 8%, 9% आपका जो भी होगा, इन द लॉन्ग रन इक्विटी इज सपोज टू आउट परफॉर्म दैट, इक्विटी सपोज टू आउट परफॉर्म दैट एज ऑफ नाउ। दैट्स हाउ। सरोज पाल मैडम का क्वेश्चन है, नेक्स्ट आईपीओ। मैडम आईपीओ तो जब भी आएगा आप चेक कर सकते हैं गूगल में, कौन कौन से आईपीओ आएंगे, आते ही रहते हैं आजकल, काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं। लाइक कौन सा आईपीओ में आपको लगाना है, आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर भी लगा सकते हैं, अगर आप एक बहुत ज्यादा फंडामेंटली इन्वेस्ट नहीं करना जानते हैं तो, कि किसमें। लेकिन आजकल इतने सारे डीमेट अकाउंट हैं कि लोगों का आईपीओ निकलने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। राइट, सो दिस इज इट। I'm not sure how many people are live. Actually, 4 are watching. Okay. So, any other questions? Okay. माइक्रो स्टॉक्स, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स यार। आपको मेरे व्यूज अच्छे लगे, थॉट प्रोसेस विल रियली लव टू लर्न अबाउट इट। थैंक यू यार। आप हमारे वीडियोस देखें, सारे वीडियोस देखें, एक एक करके देखें, और अपने फ्रेंड्स को बोलें यार, उनको भी शेयर करें वीडियोस ज्वाइन करने के लिए। सो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू अस आल्सो, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट न्यूली, आप खुद ही देख सकते हैं जैसे कि इनिशियली जो ट्रैक्शन गेन करना वो बहुत लाइक इट्स अ टफ टास्क। सो अगर आप शेयर करेंगे, सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस, राइट? सो any question, if someone wants, I can see 4 people watching. आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्राइटेरिया आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपको केवल इनिशियल गेन्स कमाने हैं, लाइक, तो आप गूगल में जाके सर्च करें ग्रे मार्केट प्रीमियम, और जो भी पर्टिकुलर कंपनी है उसका नाम लिख दें ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ, एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है आईपीओ वॉच करके, आपको वहाँ पे वेबसाइट दिखेगी। आईपीओ वॉच ने स्पॉन्सर नहीं किया मुझे, अभी तक तो मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। सो आईपीओ वॉच करके एक वेबसाइट आएगी, आई बिलीव दे अपडेट इट मोर फ्रिक्वेंटली।
सो आईपीओ वॉच में जाकर आप क्लिक करें, आईपीओ वॉच आपको दिखाएगा कि कितना आपका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपको किसमें 20%, 30%, 25% या 50% जैसा भी आपको लग रहा है। नॉर्मली आई इन्वेस्ट इन दोज जिनका एटलीस्ट 20%, 25% होता है, जस्ट बिकॉज द रीजन बीइंग इज कि इट्स मोर ऑफ लाइक मार्केट वॉलेटिलिटी एंड ऑल। अगर कभी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, सो एटलीस्ट वो 20% जीरो होके नेगेटिव ना हो जाए। द अदर वेज, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि जाके जो उनका डॉक्यूमेंट होता है 500 पेजेस का, विच एवरी कंपनी सबमिट टू द एक्सचेंज, जिसको हम DRHP बोलते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, आप वो पढ़ना शुरू करें एंड देन कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करें। सो आई बिलीव कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता और दे आर नॉट इनटू दैट मच कि भाई मैं ये सब पढ़ूं। सो आप जाके नॉर्मली ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें और अप्लाई कर दें, until unless you are applying like लाखों में अपने नेटवर्थ का एक पर्टिकुलर पोर्शन में आप नहीं जा रहे, तो उतना कुछ पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ आपको चाहिए, निकलना भी नहीं है। आप 100 में लगाओगे 2 में निकलेगा, इतना पढ़ लोगे आप। 500 पेजेस हर एक आईपीओ के, 5 आईपीओ एक हफ्ते में आ रहे हैं, 2,500 पेज, तो आप वहीं पढ़ने बैठ जाओगे। तो उसका तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा मतलब है। सो दैट्स ऑल इट इज। Any further question, or maybe we can end the stream. um, वक्रांगी शेयर, ज्योति मैडम का क्वेश्चन है। सो वक्रांगी शेयर, अगर आप देखेंगे ना, ये some 6-7 years ago it was like they had some issues like corporate governance के, उसके पहले भी इनके corporate governance के issues थे। So what I believe is there are high chances कि आपके पैसे ना बने वहां पर वक्रांगी में, क्योंकि एक बार क्या होता है कि लोगों की जो अंदर से जो एक टेंडेंसी होती है, लाइक एक जो मेरा नेचर है ना अंदर से, वो कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं एक चोर हूं तो वो मेरे अंदर चोरी की जो मेरी प्रवृत्ति है ना, व्हाट यू कॉल इट इन इंग्लिश मुझे नहीं पता, बट आपकी जो चोरी की प्रवृत्ति है वो रहेगी। अगर मैंने चोरी करना स्टार्ट किया है, लाइक कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं से भी कहीं से भी निकल रहा हूँ और मेरे को दिखेगा कि भाई यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज मैं चोरी कर सकता हूँ, सो वो मैं हमेशा करने का ट्राई करूंगा कि भाई अगर कोई नहीं देख रहा तो मैं उठा ही लूँ ये चीज। सो द सेम थिंग हैपेंस विद द मैनेजमेंट आल्सो विद ऑफ द कंपनीज, कि जिनको अगर रहता है कि भाई हमें चोरी करनी है, सो वो चोरी करने में लगे रहते हैं। आप समझ रहे हो कि लाइक दे फील लाइक कि भाई कैसे भी मैं इधर उधर से दाएं बाएं से पैसा बना लूं। मतलब दे आर नॉट इन्वेस्टर फ्रेंडली। आपने तो कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं, बट एक बंदा जो 50%, 60% लेके बैठा है, अगर वो ये चाह रहा है कि मैं दूसरों को पैसा ना बनाने दूं अपनी कंपनी में, उस पर उससे मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत वाइज डिसीजन है। आप कितना भी ले सकते हैं, हो सकता है आपने कहानियां सुनी हो कि 30 रुपए का मिल रहा है, किसी जमाने में 300 रुपए का मिलता था या 3,000 का मिलता था, तो फिर से हो सकता है, बट वो कहानियां चलती नहीं है, वो बस कहानियां हैं, कहानियां वैसी नहीं चलती नॉर्मली, ऐसा नहीं होता आपका। अगर आप मेरे मेरे मेरा मेरे को ऐसा लगता है कि दीज थिंग्स डोंट वर्क। इससे बेटर है कि आप इन्फोसिस या TCS ले लो, या मे भी पेटीएम भी ले लो, तो शायद चल जाए, या फिर पॉलिसी बाजार वगैरह। दे आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिसी बाजार एंड पेटीएम बिकॉज दे आर आल्सो फिनटेक्स। सो या फिर आजकल जैगल प्रीपेड है, व्हिच इज लाइक, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई वैसे करके देखता है तो, सो दोज आर द थिंग्स कि अगर आप जैगल प्रीपेड और ये सब कर दो, सो दैट्स ऑल द पॉइंट इज। बट ऐसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पैसे बनेंगे, या बहुत बड़े पैसे तो बहुत ही मुश्किल है। दैट्स ऑल। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, so thank you everyone, thanks for joining. This would be a short one. I hope next time जब हमारा लाइव रहेगा तो शायद ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम सॉरी यार, हम निशांत क्वेश्चन, सॉरी निशांत यार, आई डिडंट सी इट। हेलो निशांत, आर यू लिसनिंग? या हाय अमित। आई एम सॉरी यार, मैं वहाँ पे कमेंट्स देखने लगा, इतने में नहीं नहीं, शायद कोई इशू नहीं ड्रॉप हो है। गए होंगे। ओके,
So how I generate initial ideas? Yeah, initial ideas generate करने के लिए what I do for my like YouTube videos में तो I have taken the whole exchange जो भी मेरा है लाइक निफ्टी 250 के जितने भी स्टॉक्स हैं मैंने एक बार पकड़ा एंड देन आई वाज लाइक मैंने फिल्टर आउट कर दिए इंडस्ट्री वाइज लाइक मेरे को अगर फार्मा की समझ नहीं है क्योंकि फार्मा में पता नहीं कितने तरह के एपीआईज हैं और क्या क्या चीजें तो मेरे को समझ नहीं आया आई फिल्टर्ड आउट एपीआईज वाला फार्मा बिजनेस आई फिल्टर्ड आउट केमिकल बिजनेस मेरे को केमिकल की समझ नहीं आया आई जस्ट पुट द फिल्टर की मेरे को किन किन चीजों की समझ है एंड देन देयर विल बी लाइक 50-60 बिजनेसेस केम देयर ये बिजनेसेस हैं जो कि मेरे को लगाने हैं एंड उन बिजनेसेस का आई स्टार्टेड रीडिंग जैसे मेरे को लाइक डेयरी इंडस्ट्री जिसको मैं डेली यूज करता हूँ एटलीस्ट मेरे को बेसिक समझ है लाइक ज्वेलरी का मेरे को बेसिक समझ होगा अल्कोहल का मेरे को बेसिक समझ होगा आपके जो रिटेलर्स हैं लाइक डी मार्ट हो गया या आपका वी मार्ट है तो वी मार्ट है विशाल मेगा मार्ट है ऑल दिस कंपनीज एटलीस्ट मेरे को बेसिक समझ है इन सारी कंपनीज के बिजनेसेस की not like the some chemical business जहाँ पर there are too many moving parts also in chemical की like आप एक raw material के दाम ऊपर नीचे होते हैं 4 बार तो साल में and then आप जिसको sell कर रहे हो उसमें आप अचानक से प्राइस बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो and which chemical is like is it a unique chemical can is it the only company which is producing क्योंकि हर एक कंपनी तो अपने बारे में अपनी तारीफ करती ही करती है it's more of कि like हम कितना उसमें कर सकते हैं so that's how apart from that sometimes it like I keep on listening to the like cnbc and all those business channels and reading newspapers like I read daily 3 newspaper business standard economic times and mint I read daily 3 so अगर वहां से कोई theme particular मेरे को दिखती है so उस theme में जाके पढ़ते रहते हैं so that's how it's like nothing and then from this 2025 onwards like we are in the process of forming a small group of 4-5 people where like some of my colleagues and some of my ex-colleagues like most of them are like they are finance professionals only and weekly like we will be reading one company weekly and everyone will be presenting a 5 to 7 minutes presentation in the group so in a way like पहले अगर मैं एक वीक में एक कंपनी पढ़ पाता था तो अभी हम एक वीक में मे बी 6 to 7 companies या 5 to 6 companies पढ़ पाएंगे so it will be more of like and we have decided that we will be streaming that presentation so maybe people can also join there so it will be like एक साल में अगर मैं 50 पढ़ता था पहले so our universe will be like bigger now maybe 300 to 350 companies in a year we will be like able to read so that's how we are थिंकिंग उसमें यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है स्क्रीनिंग के लिए आप स्क्रीनर में लगाते रहो लेकिन व्हाट आई बिलीव इज लाइक स्क्रीनर में जब तक कंपनीज रिफ्लेक्ट करती हैं तब तक a lot of run up has been done that's what I believe maybe your thoughts nishant how you do it Yeah, so there is a forum which you must have already seen, like Value Picker and all, and yeah then there are good channels like Soik and there is a Kumar Saurabh channel. So some of this, blogs and all. yeah So from there yeah also, but obviously I don't follow them or buy blindly. I Hmm. also do some research. So I've been investing from the last 15 years, and wow initially I was a long-term investor only, but from past 2 years, mm, I do short-term investing also. Like maybe if I have purchased a stock from a point of 2 years or 1 year, and the run-up has been done in like maybe 3 months or 6 months, true so true I switch over that stock to some other company. good yeah So good डेफिनेटली निशांत वी कैन कनेक्ट मे बी अगर आप मुझे नहीं पता आपने मुझे ट्विटर पे कनेक्ट किया है क्या सो मे बी वी कैन एक्सचेंज सम आइडियाज आल्सो देयर सो इट विल बी गुड यार yeah. यू कैन आल्सो ज्वाइन अवर टीम जो हमारी 4-5-6 लोगों की टीम वी आर बिल्डिंग इट अप like to discuss Mhm. maybe you can also join and we can also like we will be presenting ideas only like हमें जितने ज्यादा पे आप इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ लाइक आप कितने को उठाकर देखते हो अगर Mm. मैंने 50 देखे 50 में से हो सकता है मुझे एक लगे लेकिन अगर 500 देखूंगा तो शायद 500 में से मुझे 2 या 3 दिख सकते हैं राइट Yeah, yeah, सो इट्स definitely. I मोर mean, ऑफ लाइक लाइक आपने बोला तिलक नगर मिस हो गया अगर हो सकता है हम 5-6-7 लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी सो वी कैन एबल टू like we can decode more and more stories right it's all about yeah.
decoding the more stories, how many stories you can go about. So we will connect. अब मेरा ट्विटर का लिंक यूट्यूब में आपको मिल जाएगा अगर हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे नहीं पता यूट्यूब पे मैसेज कैसे करते हैं. आई डोंट थिंक देयर इज एन ऑप्शन आल्सो, राइट? सो मे बी अगर आप ट्विटर पे कनेक्ट करेंगे, सो वी कैन डेफिनेटली वी कैन ऐड यू देयर एंड वी कैन शेयर फ्यूचर आइडियाज आल्सो, राइट? श्योर. Yeah, yeah, definitely, Amit, we can do so. Sure. Thank you. Thanks, Nishant, for joining. Thanks a lot, everyone. One last question we'll take. What about penny stock? नहीं मैडम, penny stocks में मत इन्वेस्ट कीजिए. आपके ज्यादा चांसेस हैं कि पैसे आपके जाएंगे आने से पहले. ठीक है. Thank you. Thanks a lot, everyone, for joining. And we will be doing it every Sunday, 12:30 to 1, same time. If people can join, new people will be joining. So that's all. Thank you. Thanks a lot, everyone. Thanks for your time.